Hello, hi, good morning. I am Subhranshu Karan Singh and you are watching online botany on BIOSS. आज आम डिस्कसन करिबा 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ. जीवनर 3टा मुख्य संभाग मुख्य संभावना सुपर किंगडम. डोमेन्स कहले आमे कहू आमे बुझू सुपर किंगडम. सो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ जेते बेले आमे कहू जे सेते बेले आमे जीव सत्तार 3टा प्रमुख साम्राज्य विषय डिस्कसन करूचे. नाउ व्हाट इज लाइफ? प्रथम क्लास में कहि सारिचे लाइफ इज a combination of processes such as digestion, respiration, excretion, growth, reproduction, death. All of them together differentiate a living organism from a non-living object. So, ये जो सब प्रोसेसेस ए सब प्रोसेसेस को नेकी ही जीव सत्ता विकसित होइछि एवं ऑल दिस एक्चुअली डिफरेंशिएट लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग. तो सेही जो लाइफ हमें देखिले जो लाइफ कथा हमें कहूचे दैट लाइफ इज बेसिकली फ्लोरिश्ड इन टू फॉर्म्स. Basically flourished in 2 forms. It may be unicellular or it may be multicellular. So what is unicellular? Unicellular means single cell organism जोठारे गोटिए सेल भितरे जेते गुड़िए लाइफ प्रोसेसेस कथा हमें कहूचे जेमिति की डाइजेशन, जेमिति की रेस्पिरेशन, जेमिति की एक्सक्रेशन, जेमिति की ग्रोथ, जेमिति की रिप्रोडक्शन. All such things happen in a single cell only. That organism is known as unicellular organism. That organism is known as unicellular organism. प्रति सिंगल सेल को हमें unicellular organism बोली कहिबा नहीं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आमे सेते बेले कहिबा जेते बेले गोटे सिंगल सेल भितरे सेल लाइफ रा एंटायर प्रोसेस सब प्रकार प्रोसेस कंप्लीट हे पारु थिबो. नाउ द सेकंड फॉर्म इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज such an organism where more than a cell combine together to form a tissue, again combine together to form a tissue system, again combine together to form organ, again combine together to form organ system, and finally an organism. That means in case of multicellular organism, multiple cells are responsible for मल्टीपल वर्क्स. अर्थात हार्ट भितर थिबा सेल सर्कुलेटरी फंक्शन करे whereas स्टमक भितर थिबा सेल रेस्पोंसिबल फॉर डाइजेशन. सो जदि आमे यार बेसिक डिफरेंशिएशन बुझिले ताला आमे या बुझिले जे यूनिसेलुलर रे गोटे सिंगल सेल भितर एंटायर सेल फंक्शन होउछ whereas मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आमे ताकू कहिबा जोठी एकाधिक सेल रेस्पोंसिबल होंती गोटे पर्टिकुलर फंक्शन को कैरी आउट करबा पाई. बुझियला. नाउ जो मल्टीसेलुलर बा यूनिसेलुलर लाइफ कथा आमे कहिले ऑर्गेनिज्म कथा कहिले बी इट एनिमल और ए प्लांट और ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्राणी हो उद्भिद हो बा अणुजीव हो, ये जहाँ भी आमे विषय कथा होचे ये समस्ते बेसिकली 2 प्रकार फॉर्मेट रे आम आगे अवेलेबल हुअंती. व्हाट आर दे? नाउ एज वी नो इन द लास्ट क्लास आमे कौन कहिले सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अर्थात कोश होची सेही क्षुद्रतम वस्तु जहाँ भितर जीवनर सत्ता प्रकाशित होइछि. जदि आमे ताको भलो भाबरे बुझिबा पई चेष्टा करिबा ताहाले आमे सेल रे पाइबा कोन ना सेल रे बेसिकली आमे 3टा जिनिस
अंडरस्टैंडिंग भितर को नौ. Now the outermost layer is known as cell wall. Is known as cell wall. ता भितरे जो लिक्विड थाए ताको आमे कहू प्रोटोप्लाज्म बा साइटोप्लाज्म. नाउ ता भितरे सेल ऑर्गेनेल्स बा जीवकोशर जो सबु वस्तु तार गठन रे सहायक होइथांती सेमाने सब ता भितर ता फिलअप करथांती ता सेल ऑर्गेनेल्स कहू एवं ता मझी रे थाए गोटे न्यूक्लियस. नाउ जतेबेले आमे सेल कथा कहूचे सेतेबेले आमे बेसिकली एई जिंस ही कहूचे जे सेल साइटोलॉजी बा सेल बायोलॉजी मैडम जो क्लास नौथिले ता भितर जतेले तुम फर्दर आगु को जिबा आमे हरि बेटर भाबे ताको बुझी परिबा. ता भितर जो सेल कथा कहिले जतेले आमे से सेल बायोलॉजी को एक्चुअली पढिबा आरंभ करिबा ता भितर आमे एई तीनटा जिंस पाइबा सेल वॉल साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस. बट सेल वॉल इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल ओनली. एनिमल सेल हे गले एटा सेल मेम्ब्रेन हे जिवो सेल वॉल रहिबो नाही. इट विल बी सेल मेम्ब्रेन. सो जतबेला हम प्लांट सेल और एनिमल सेल डिफरेंशिएशन देखिबा सेतबेला हम इठी गोटे बेसिक डिफरेंशिएशन कहिबा कोन एनिमल सेल रे सेल मेम्ब्रेन थाए प्लांट सेल रे सेल वॉल थाए. तेणु जो सेल रे सेल वॉल अछि दैट इज ए प्लांट जो सेल रे सेल वॉल नाही सेल मेम्ब्रेन अछि दैट इज एन एनिमल. ओके नाउ এই जो तीनटा जिनिस हमें तीन बेसिक जिनिस देखिले प्रति सेल भितरे এই तीनटा जिनिस को नहीं की चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो they are divided into two broad categories. What are they? They are prokaryotes and eukaryotes. Now, prokaryote and eukaryote. What is prokaryote? What is eukaryote? We need to understand. It is a pro kahili. या भीतर गोटे word रहिला pro. Is not it? So pro means primitive. Pro means primary. जो प्रथम अवस्था development very fast stage. And karyote is derived from the word karyon. Karyon means seed. Karyon means knot, bija. So here karyote is responsible. Karyote is referred to the nucleus. You are getting my point or not? To the nucleus. So prokaryote कहले आमे बुझू से सेल कथा जो सेल रे न्यूक्लियस टा प्रिमिटिव कंडीशन रे अछि प्राइमरी कंडीशन रे अछि बा कंप्लीटली डेवलपमेंट हेई पाइ नाही. Getting my point? So this is prokaryote. Now come to eukaryote. Now eu रे आमे गोटे वर्ड नुआ पाइले कोन eu. What is eu? Eu means good. Eu means good. जेमते pro means primitive कहिथिली सेमिति eu means good. Karyote means again not or about nucleus. Now eukaryote cells are those cells where this nucleus is of good quality or it is completely developed. That means आमे जो life कथा कहूचे either it may be unicellular or it may be multicellular, but it has only two forms, prokaryote and eukaryote. But here is a catch. So what is the catch? The catch is up to this level we have these two varieties only, prokaryote and eukaryote. But when we observe it in its microscopic way,
under electron microscope, cytology or cell biology shows us that these three things, cell wall, cytoplasm and nucleus, there is a cell membrane, plasma membrane, which is just beneath the cell wall. Okay, plasma membrane is also there, which is just beneath the cell wall, which actually contain the protoplasm. Anyway, so depending upon these three structures, when we started differentiating things, we found this prokaryote is again of two types. Is again of two types. What are they? So, आमे जो three domains of life कथा कहिले, this is a very new concept, very recent concept. आमे कौन कहिले ना यूकैरियोट्स कथा कहिले एवं प्रोकैरियोट कथा कहिले. Now, तापर आमे कहिले जे as per this phenomena, cell wall ro composition, nucleus ro composition, cytoplasm ro composition, ए सब को नेला परे आमे प्रोकैरियोट को again दीटा भागरे विभक्त कले. What are they? First one is Archaea and second one is bacteria. Now, this entire prokaryote, all this, either it is Archaea or bacteria, both are devoid of this nucleus. Dita jaka case re nucleus conspicuous, clear nuhe, distinct nuhe, properly develop he nahi, ebong genetic matter ta cytoplasm bhitere, protoplasm bhitere free flowing condition rachi, both in case of Archaea and bacteria. But there are certain basic difference jaha upare this prokaryote has been divided into these two categories, Archaea and bacteria. Now there is a scientist called Carl Weiss. Carl Weiss first time पे propose कले three domains of life system. Carl Weiss, Otto Candler and Mark Wills. These three scientists in the year 1990, they have proposed this theory of three dimension of life, where they says that cell, either multicellular organism रहो or unicellular organism रहो, से तीनटा basic format रे ही express होची Archaea, bacteria and Eukarya. Archaea, bacteria and Eukarya. Now we will see the difference between these three. So, coming to the differentiation between Archaea, bacteria and Eukarya, or how come they are different from each other and why they are under separate domains. Now, as I say, either it is unicellular or multicellular, the form can be of these three only. So, जेतेबेला हमें किंगडम फॉर्म, जेतेबेला हमें टैक्सा फॉर्मेट को जाउचे ना, हमें कोन आरंभ करतिले स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, kingdom, phylum, kingdom. Now, above kingdom, these things comes the domains, the super kingdom. Okay, so we have three super kingdoms, three domains, Archaea, bacteria and Eukarya. मो या पूर्व स्लाइड रे जो देखौथिली एठी मो गोटे ड्रा करथिली सेल र फिगर तादिरे मो तीनटा जिंस बारंबार कहउथिली सेल वॉल, cytoplasm and nucleus. Now, depending upon these things, we have derived the 7 points जहाँ ऊपर बेस करिकी हमें Archaea, bacteria और Eukarya को differentiate करिबा. Now, first come the size. Now, Archaea is basically of the size of 0.1 micron to 5 micron. They are the smallest thing. They are the smallest life format. Whereas bacteria are mostly 5 micron to 15 micron and eukaryotes are above 5 micron size. Coming to cell wall. Yes, cell wall is present in Archaea, but no muramic acid is found. No muramic acid is found. In case of bacteria, the cell wall is present with peptidoglycan and muramic acid. Both with peptidoglycan
and muramic acid both are present in case of bacteria. But in case of eukarya, no muramic acid is present. Cell wall ra plant cell case रे जो cell वाला में देखू से cell wall रा रे कौनसी muramic acid रा trace देखा जाए नहीं. Point number 3 is membrane lipid. Now मु कहिथिल ना cell wall तळे गोटे cell plasma membrane थाए. So that plasma membrane Archaea case रे ether linked isoprene derived chains थाए से जो cell membrane ता भितरे chain like structures that are made up of isoprene. Okay, now in case of bacteria they are fatty acid, straight chains of fatty acid. Straight chains of fatty acid, the same thing which is also found in case of eukarya. So in this case, this bacteria and eukarya have the same format in membrane lipid case, whereas in your Archaea case, isoprene derived chains are present. Whereas in cell wall, the cell wall formation of Archaea and eukarya are same with no muramic acid, whereas in case of bacteria it is having muramic acid. Just look at these things. Then RNA. Now in case of Archaea, no thymine is present in RNA transportation, whereas in case of bacteria and eukarya both cases thymine present thai. Now coming to antibiotic sensitivity. Antibiotic sensitivity. What is antibiotic? Antibiotic हमें कौन पे use करो? When we get infected with a bacteria, basically हमें antibiotic use करो to neutralize the bacteria. To neutralize the bacteria. Now bacteria are of two types, gram positive and gram negative. जेतबेले हमें bacteria पढ़िया सेतबेले ताक ऊपर हमें analyze out के details रे करिबा. But we have to identify which of them is sensitive to which antibiotic. There are different types of antibiotics. Now here the Archaea are non-sensitive to antibiotics. Antibiotics have no role on Archaea, whereas they can neutralize the cells of bacteria and eukarya, as bacteria and eukarya are sensitive to antibiotics. Getting my point? So antibiotic sensitivity case रे Archaea रे कौनसी reaction देखा जाए नहीं, whereas bacteria and eukarya case रे antibiotic sensitivity देखा जाए. Point number 6 is nucleus. Again, whether it is Archaea or bacteria, both of them are prokaryotes. Don't forget, both of them are prokaryotes. That means both of them have no clear nucleus. No clear nucleus. Prokaryotes, primitive nucleus. No clear nucleus, or the genetic material is freely floating inside the cytoplasm. Whereas in case of eukarya, the cell nucleus is clearly visible. It is of good quality. It is distinct. Now, gas vesicles. In case of Archaea and bacteria, large numbers of gas vesicles are found. They are large in size. Whereas in case of eukarya, we don't found gas vesicles. So these 7 points, actually there are so many, but that will be much differ. So basically upon these 7 points, 7 characters, we differentiate Archaea, bacteria and eukarya, and we say that life र जो यूनिट जहाँ को हमें सेल कहले से सेल यही तीनिटा फॉर्म रे ही आम पाखरे अवेलेबल हुए एवं यही तीनिटा को 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ बोली कहा जाए आर्केया बैक्टीरिया एंड यूकेरिया. पिला माने आज तो समय हे गलानी आज क्लास को एठी रखिबा. क्लास जदि भल लागि थाए ताहले डेफिनेटली लाइक बटन प्रेस करिवे एंड दोज हु आर न्यू टू द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू. हैव ए गुड डे.